you guys, good morning and welcome to another episode of I don't know what. This is more Mau or Manasi Mau. I'm so confused at this point. I am freaking out. It's 2nd of December and I have a flight to Bali. I've lost it. Bapre, odha brightness. Oh, no. It's 2nd of December. 11 बज गए हैं and I have a flight to Bali tomorrow with my girls and मैंने कुछ पैकिंग चालू नहीं किया, like legit I don't even know if I have clothes for Bali, like Bali appropriate clothes, and I'm freaking out because though the flight is late night tomorrow but आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है because अभी 2 बजे ईवी का ग्रूमिंग अपॉइंटमेंट है और आपको पता है कि मेरा पूरा दिन ग्रूमिंग के यहाँ पे चले जाता है and I have a few things to edit also, so I'm freaking out. But अभी ऐसा हो गया ना कि इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया है कि अभी प्रोक्रेस्टिनेशन करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन. आई एम गोइंग टू लाइक फिगर आउट अ फ्यू आउटफिट्स. इफ नॉट विल रिपीट आउटफिट्स. आई डोंट केयर बट आई एम जस्ट गोना हैव फन. डिड लाइक अ नाइस हाईलाइट सिचुएशन. Eve is growling at kabutars, but can you guys see? I had gone to Ami's and I did like proper idhar se crown highlights because I feel my hair was little blah, and I also like cut my hair a little bit but not the length, just the like face framing stuff. We are going for 5 days, technically 4 days only because 3rd raat, so 4th, 5th, 6th, 7th and 8th को हमारी flight है, so 4 days. So 2 airport looks and 4 days के 2 outfits per day, so 8 outfits should be good. चला. One day I will have like a nice walk-in cupboard. Next dream. Anyways, मैंने फिर भी सब अच्छे से रखा हुआ है तो मुझे भी मालूम नहीं इसमें से लेना क्या है. Okay, I have this very cute orange. What is this? Oh wow, it's a jumpsuit. Why do I have so many orange kapras? All right, I have like tried almost all of these clothes. ये सब जो आपको दिख रहा है वहाँ पे भी I tried everything and I have finally decided कि मैं क्या क्या लेके जाने वाली हूँ. So yeah, that's why I'm in a bathrobe because I was trying all the clothes. I still haven't showered. It is 12:30, so I have only half an hour to like ghadi all these clothes, take a bath and leave because 1:15 I should leave. 45 minutes तो लगता है मुझे पहुँचने के लिए ईवी के ग्रूमर्स के यहाँ पे जाने के लिए. So yeah, let's do that. Guys, don't mind the mess behind me. What happened? Why are you wagging your tail? Do you want to come to Bali with me? Yes? Yes. Okay. But I can't take you. I know it's a girl's trip and you're also a girl, but you can't come, Mama. You can't. गुस्सा हो गई. So this is my bathrobe which I'm carrying for Maddie actually. So she has no idea हम उसके लिए क्या क्या surprise कर रहे हैं. थोड़ी बहुत उसको idea है rather because she's the bride. So I want her to wear a different colored bathrobe. So in case you're gonna click like those Pinterest appropriate pictures in the bathtub and like everybody bridesmaids are wearing white gowns and she's wearing a different color. So I'm taking this for her. देन ये ब्लू ड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है अर्बैनिक का. मैं सारे पिक्चर्स पॉप करते जाऊंगी. देन अगेन मेजॉरिटी जो भी मैंने अर्बैनिक का हॉल किया हुआ है आप जाके देख लो बिकॉज मैंने वहीं से सारे कपड़े उठाए हुए हैं. दिस ऑल्सो कैन बी लाइक अ ग्रेट चिल इन द विला काइंड ऑफ आउटफिट. देन दिस ऑल्सो इज फ्रॉम अर्बैनिक. दिस इज लाइक अ बेदिंग सूट. दिस देन इसके नीचे शॉर्ट्स है. These are the shorts, very transparent stuff, and then there is a cover up. It's a jacket. Yes. Then I have 2 orange thingies because I was like, you know what, let's just like have a pop of color. This is like my bikini suit, but this is not a bikini. This is like a monokini. I don't know what to say, but basically इसमें कैसा है पता है, I'll show you. It's a very modest bikini you can find. So this is the top. ठीक है, so like your stomach and everything is covered, and नीचे I'm honestly not like comfortable wearing those thong kind of bikinis, so I have like a normal chaddi इसके नीचे. So I have just showered and I'm kind of running late. It's 1:10. Technically I was supposed to be out by 1:10, but ठीक है because I'm gonna go shopping after this. That's otherwise I don't do so much when I take Evie to the groomers because anyway सब बाल वाल आ जाते हैं. But today I don't have time because outfits तो आपने देख लिया. मेरा outfits का scene नहीं है but मेरा जो toiletries का scene है. मतलब I have like big shampoo bottles and since it's a beachy location it's going to be like very humid and I am gonna have to wash my hair quite often and I have like big shampoo bottles.
So I need those squeezy tubes. I'm not gonna do like concealing or anything, but I'm gonna do like a light layer of foundation. And for that, I'm gonna use my favorite everyday foundation, which is by Dermaco. It's the 2% niacinamide high coverage foundation. I am in the shade 2 Nude. I took this for साउथ कोरिया एज वेल. मैंने आपको दिखाया ये फाउंडेशन. सो बेसिकली दे हैव 7 शेड्स. तो अगर आपकी स्किन फेयर या लाइट है, यू कैन चूज फ्रॉम आइवरी और न्यूड. इफ यू हैव मीडियम स्किन, यू कैन चूज फ्रॉम नेचुरल, कैरामल एंड पीच. एंड इफ यू हैव डीप एंड डार्क स्किन टोन, यू कैन चूज फ्रॉम बेज एंड सिनेमन. एवरीडे काइंड ऑफ अ फाउंडेशन, एंड मैं बस लगाने के लिए लगा रही हूँ. इट डज हैव अ लॉट ऑफ कवरेज बाय द वे, बट टुडे लाइक कैन यू सी, यहाँ पे मुझे थोड़े पिंपल्स है. I'm just gonna cover it up. This, when I use ऐसे very lightly, kind of acts like a BB cream also, so it can be a great everyday foundation जिसमें skincare भी है और coverage भी है. So as I said, this has 2% niacinamide and 1% hyaluronic acid. Great for winter season, I feel, because of the hyaluronic acid, it's not gonna make your face look stretched or icky or dry. Like you guys can see, like यहाँ पे मुझे थोड़ा pimples का mark था, but वो मैंने just like blend किया brush से, and it's all good to go. This foundation has a sun protection of 40 PA++ as well, which protects your skin from UVA and UVB rays. Every time you buy from them, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi Foundation. All Dermaco products are fragrance free. As usual, I have a coupon code called Manasi2023, which will give you 20% off on their website, but these products are available on Amazon, Flipkart and Nykaa. I love the finish that it gives. Can you guys see? Of course, I have not concealed my under eyes. I'm gonna like powder my face real quick. Yeah, we are good to go. I have not concealed or put mascara. This is good to go. I have the packing cubes that I showed you guys in South Korea का packing video. If you have not watched it, go ahead and watch it. तो उसमें जो मैंने पैकिंग क्यूब्स वापरे थे, मैं वही वापरने वाली हूँ वापस. वापर गॉड, यू गाइस, आई एम लाइक रनिंग ऑन ऑटो पायलट. One eternity later. Hello friends, I am back. It is 6:10 currently. This is the mess situation. We need to do this फटफट because अभी बहुत ज़्यादा last moment हो रहा है. अभी अति होता है मानसीचं. So मानसी, enough. These are the packing cubes. इसके अंदर और 5 है. घाबरले ना मी. तुम्ही काय आले पण इकडे? तुला मदत करायला. तुला जर थोडी हेल्प झाली तर बरं ना. उद्याचं काम थोडा आज कमी करून घ्या. I had no idea Baba's gonna come. You guys saw, he just opened the door with the key. He has extra keys by the way. म्हणजे कोणतून तरी मला आवाज आला आणि इवी started barking, like looking at it असं की कोणतरी चावीचा आवाज करतंय and all. मला वाटलंच बाबा आलेत. Baba's cleaning the bag because साउथ कोरिया वालों ने बहुत गंदी तरीके से हैंडल किया. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. सॉरी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई एम लाइक रशिंग एवरीथिंग. सो अभी मेरी सिर्फ ज्वेलरी बची हुई है. तो इसमें ना आई हैव एडेड लाइक माई ईयरिंग्स एंड एवरीथिंग, बट मैंने इसमें ना नेकलेस नहीं डाला हुआ है बिकॉज नो मैटर वॉट आई डू, नो मैटर कौन सा ऑर्गेनाइजर कितना महंगा भी खरीदूँ, it just gets entangled and I have extremely low patience when it comes to detangling my jewelry. So एक सस्ता टिकाऊ उपाय बताती हूँ. मैंने भी ये Pinterest पे देखा है, not my idea. You take any kind of plastic like this, ऐसे रखने का, and then you start putting your jewelry like this, and then you fold it, then you put your next piece like this, you fold it again twice, then I'm gonna put my third piece, fold it again, and my last piece, fold it twice, and there you go. अभी ये मैं इसमें डालने वाली हूँ क्योंकि अभी जब मैं इसको खोलूंगी प्रॉपरली एवरीथिंग विल बी डिटैंगल्ड. ये बंद होना चाहिए. यस, बंद हो रहा है.
Done. The next day. Hi guys, I finally shopped. मेरे को मिनीसो में ज़्यादा टाइम लग गया जितना मेरे को H&M में नहीं लगा, बिकॉज आई फाउंड दिस वन किट, ट्रैवल किट, एंड उसका बारकोड ही नहीं था, तो उनको ढूंढने में 15 मिनट चले गया. बट वी आर गुड टू गो. आई थिंक एवरीथिंग इज डन, सॉर्टेड. अभी आई एम गोइंग टू द स्टूडियो. लास्ट पैकिंग कर रहे, लास्ट लेग ऑफ पैकिंग, एंड देन आई विल लोड द बैग इन माई कार एंड देन गो होम. Hello, so I have showered. I look like a glazed donut because मैंने सब शेव वेव कर लिया है, हाथ पैर मुंह. तो I'll just show you guys what all is there. इसमें सारे सनग्लासेस है अलग अलग टाइप के, इसमें सारे मेन ड्रेसेस है, इसमें नाइट ड्रेसेस है, इसमें मेरे सारे आई थिंक बीच वेयर है, उसमें ब्राज एंड एवरीथिंग, माई हेयर ड्रायर. देन इसमें मैंने एक्स्ट्रा नैपकिन्स रखा हुआ है एंड माई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स. येस, आई एम लिटिल इकी व्हेन इट कम्स टू द फेस टॉवल्स आई यूज. लाइक आई नीड माई फेस टॉवल्स. एनीवे, सो दिस इज द मेकअप बैग. इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा शैम्पू वगैरह सब ले लिया है. दिस इज व्हाट आई बॉट फ्रॉम मिनीसो बाय द वे. देन इसमें मेकअप है, स्किन केयर, ये एक्स्ट्रा बैग है, नीचे मेरे स्टिक ऑन्स है, इसमें एक्स्ट्रा शूज़, नॉट शूज़ एक्चुअली, दो चप्पल्स आर इन दिस. इसमें आई थिंक हील्स है. येस, इसमें हील्स है. Jewelry. This is the bag that I got from South Korea. This can go on everything. The bride has requested that she wants another bag because she wants to keep some bridesmaids gifts. So I was like, ठीक है, मैं ले लेती हूँ तेरे लिए बैग. So ये खाली बैग है पूरी, बस मैंने डालने के लिए डाला हुआ है. Our flight is at 12:40. But we want to reach early because we want to make reels and all. So yeah, I'm just like very excited, you guys. This is like the first time Mama's flying together. The Mama Earth wala event, but वहाँ पे we were not Mama. Like that is the trip where Mama began. So it's very exciting to fly with my girls again. Okay, bag number 1, bag number 2, bag number 3. How are you feeling that your bachelorette is finally happening and you're gonna get married? Ooh, party! She's in periods, guys. She's not able to express her excitement. Kal aana. Tomorrow. Stay tuned.